All right, so let's Yes. start this interview. And first of all, Yeah. it's so good to actually, it's probably the first time I'm interviewing such a young footballer. So I've never done that. So that's why it's a first for me. So I'm very excited about it. And for me, it's a big pleasure to be here, to speak to you. And thank you for inviting me here to speak to you. Thank you so much. Well, ladies and gentlemen, this is not some any other footballer we're talking about. We're talking about the only Indian to score in a FIFA tournament, and he did so as he scored a header in the Under-17 FIFA World Cup 2017. And I'd like to ask Jeakson Singh, how many times have you heard this introduction now? Do you have a score of it? After scoring, I think every time wherever I go, I think I got like it always start like this only, same way that you are talking about. Well, that's the reason why I was thinking of any other way of doing it. So I'm going to just say that, a star from Manipur who is sort of putting ahead a pedestal for a lot more youngsters who are coming from that state. So I have to first of all ask you, what is happening in Manipur? What is happening at the grassroots level that so many players are coming out there for the country and for the club? I think I think in Indian football, I think many people, they used to know like Manipur is like kind of football house. They talk like that. Yeah. I think because we produce a lot of players, so I think we love to play football. I think other sport, there is also many sports who have produced many great players, but still the football, I think we all love football. I think. Well, I can tell now. So that's that's why I think many players coming out, many young players, and many currently playing for national team also, and many other who are playing in the ISL. So there was 43 players, I think, playing in ISL. I think so. I think it's big thing for like such a small state and producing a lot of international player, and I feel proud to be Manipur. I'm sure you are, and I'm very proud of in my country the way producing footballers. It's beautiful. And since you said that you've heard that introduction so many times, you have to tell me, after that score that you made in the FIFA tournament, how much did life change after that? And what all happened? I think everything has changed after that. People start to wherever I go, I think people call me as a only one who scored a goal for India in the FIFA World Cup tournament. So I think it's been after scoring that, I think the life has changed a lot. People now start recognizing me as a history maker. I think I feel proud. I feel proud always. And that made me happy. That's what. Has there been an increment in the female fan following Jeakson? Maybe. Maybe. I wish. Well, that's more like it. That's what I wanted to hear. But let's start from the beginning. You tell me, what was your childhood like? Childhood, I think for me, I think it was you're asking about football, how I came to football, or like just in general, like how did you grow up? What was your father doing? What was your childhood like? Did you have many friends? Yeah, it was pretty difficult. Before, I think for me, it was easy to get involved in any sport. If I was not playing football, even if I was not playing football, maybe I could have been in other sport for sure. I think because I grew up in a sports family. My father played a lot of sports. I don't know, but he didn't get much success. But he played a lot. He loves sports. Every sport. I'm talking about every sports. And especially after my brother was also a football player. So for me, it was like I grew up in a sports family. So for me, it was so easy to love with the sports. And later I fell in love with the football. Showing I grew up like watching my brother playing football. It was very easy for me to get into the sports. Before that, we were just, as a kid, I was just roaming around. I was pretty good at study and all in that time. But later, when I joined football, I had to focus board, so it was a little bit difficult for me to focus on the board. But I managed to do it, and now I'm here, playing for a national team and making us all proud. But Jackson, do you remember the very first time you ever fell in love with football? Do you remember that first match when you played and you felt like this is going to be my life? Like, you mean when I fall in love? Yeah. You're asking about, right? First match. When did you realize the passion to I think there was one grassroots tournament, under 11 grassroots tournament, under 10 or something like that. And I forget. I was young, but my father wanted me to play there participate in the particular tournament. So I think that was a time when I fell in love with the football. So I choose now I want to be this. I will choose this life. So I think that was a time. I think. And where do you want to reach? Have you thought about it? What state, what level do you want to reach in terms of being an athlete for the nation? Actually, for me, in that time was to play in the highest level of the football. Obviously in that time the highest level of football was in the Europe or any other to play FIFA World Cup. That was the dream in that time. I think that was the dream only in that time. I want to reach the top level of the football. Like in that time when we used to watch TV. When we see some European player, European League, Champions League or World Cup, I always wanted to
be, playing at such high level as a footballer too. I think it's big thing, Everybody, when we do something, I think we want to reach that top level for. Yeah, so I think when you came to Minerva Punjab, how did that add value to your career? Minerva, I joined, I think 2015, I guess. In that time, that the Minerva was a new academy. They were the I-League team also, but for us it was new. I think new academy. We were the first batch, which they built as an academy. It was get experience. I think my life has changed from there. Get in the World Cup squad and all. We were champion for this two. One, my first year was under 15 I-League was there. We were champion of that, and then next year we played again under 16 I-League. So we were champion again. Yeah. And after that, the national team, they invite us to play our friendly matches because we were the champion of the India. So they call us. I think, and from there everything has changed. We won against them also. And in Minerva, I think the important thing was there was I was getting chance to play in the senior team, getting chance to train with the senior team. I think that really helped me, to build my experience or whatever needed for football to become a professional player. That helped me really a lot. Well, it shows also not just you in the kind of players that we are producing now. It also shows in the recent results that we've had with SAF and as well as the World Cup. Now, congratulations to begin with. And what does it feel like? Was this win special against Kuwait? You're talking Kuwait, I think. I think it's always difficult, when you play some Arab country. It's always difficult. Yeah. Whichever Arab country you are playing against, it's always difficult. And I think we all did great. I think I think it's also because of we get more time. I think it was almost a 2-month camp. We had, and we played on these two tournaments, and we got both trophy. I think it was also a great achievement by the team because of the time we get to train, to know each other. That's why I think that's helped a lot, and it was great, playing against this Arab country and win against them. It was not easy, but we win and we got the trophy, this 2 trophy. I think it was great. Yeah, clearly it was not easy when we were all looking at the match, and I was tweeting about it, and I was like, I can't watch this anymore. I'm gonna get a heart attack watching that match. I don't know how the players are doing. And what was your reactions like just before the penalty? What was the team discussing? Before, in penalty, I think it's also about luck, a bit of luck, Yeah. And but I think we wanted to win before penalty. Penalty is kind of 50-50, Yeah. But wanted to win before that, but it was not enough, I think. But luckily we win. We win in the penalty. I think it's still great achievement, Huge achievement. But we wanted to finish before penalty, So it's clear properly before, So when it doesn't come to 50-50, But I think we all did great, Whoever was taking penalty, I think they were very comfortable, and because of them, I think we win the trophy. But what was the mood in the dressing room like just before this final? What were the talks? What did Igor Stimac tell you all of it? Especially in dressing room, there was no coach, but he already told us, whatever we need to do for them to the dressing room in the hotel only. We were pretty clear about what we need to do because we already faced them, I think, in the league match also. We already know how they're gonna play, what kind of player they have, and we also wanted how we gonna approach the game, and we already clear about that everything. So it was pretty clear, and it was just I think we already win 2 trophy before that. We wanted to make it a treble, so it was kind of motivation to make it 3. We done the job, I think. Jeakson, what is it like working with Igor Stimac? What kind of a coach is he? What does he bring on the table? What does he say, and what does he make you do that so many such good results have come? I think his intention is clear. We all can see clearly. He wants to dominate when we play. He wants us to dominate and keep the ball. Play as much as possible in the ground. Not to kick and try to dominate. Obviously against the big team. Not just against the lower team. And he wants to. His intention is very clear. And we are. I think now we all clearly know what kind of system he wants us to play. What kind of things he wants from expecting from us. So I think it's great. I think and we have been winning, so great. Hopefully we'll continue working like that, and he will also support us like that, and we'll keep winning. I think hopefully we'll keep winning like that. Yeah. Is he very strict, or is he a strategizer, and what is his motivation speeches like? Yeah, obviously he needs to be. It's time. Depend on the situation. Yeah, if he's in the some fun situation or something, that he is very friendly and very supportive, Yeah. But yeah, in motivation time, obviously he also very great. He has been also played in the top level. He also he has been
coach for the World Cup team also, before. I think he has played in such high level, so the motivation, the way he knows how to motivate the team, how to control the team, I think it's pretty good. कुछ ऐसा बोलते हैं वो जब स्पीच देते हैं ड्रेसिंग रूम में, कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, because I have heard some really really good speeches by football coaches. Yeah, वो तो obviously देते हैं, वो तो डिपेंड होता है ना कौन सा टीम के साथ खेल रहे हो, वो भी डिपेंड होता है. अगर लोअर टीम के साथ खेल रहे हो, obviously it's less he needs to motivate us less, But if we are playing against big team and some important matches come, I think he's pretty good at giving motivation. In your career that you have seen so far, what are the major changes जो हुए हैं football structure? कोई major changes हुए, especially अभी? Major changes तो मतलब अभी like more matches, they were getting chance to play more matches, and ये इंडिया में हो रहे हैं, तो like we have more support from the fans. I think it's more advantage, when we have fans with us, I think it's more advantage for us. Because of them only, I think it was very they make us easy to win this match. Yeah. So I think तो ये changes आया है. I think और आएंगे, मुझे like I hope कि अभी और आएंगे. यही changes I think I feel like तो अभी हम लोग को और more confident feel होता है कि हमारे पीछे fans लोग support कर रहे हैं, तो obviously हम लोग को और comfortable feel होता है ना, और like और motivation आता है, like more confident we feel. That's the changes I think. अगर आप कोई एक change देखना चाहे football structure में तो क्या हो? कोई football structure में कोई changes जो मैं देखना चाहता हूँ. हाँ जी, Indian football system में अगर कोई एक change आप देखना चाहें, जिससे आपको लगता है कि इंडियन फुटबॉल जर्नी जो है वो ज्यादा सुधर जाएगा, तो what would that be? Obviously, I will say grassroots. It will be always from grassroots. We need good academy, like good academy. Not just 1, 2. We need more than 10. Whichever possible. जितना एकेडमी आएंगे उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा. जितना कंपटीशन बढ़ेगा, प्लेयर को उतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा. जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना इंप्रूवमेंट आएगा नेशनल टीम के लिए. Just like now, I think now also there's a lot of competition is there. I think in future there will be more competition. I think that's how the Indian football will grow. I think. And if I have to ask you in terms of the growth of football, ISL's contribution, and how do you rate your career in ISL? जब मैं पहले ISL जब ज्वाइन किया था, उस टाइम काफी I think there was more foreigner I think allowed. I think now I think foreigner has reduced. So I think there are more chances for Indian player to play. भी मैचेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, मैचेस भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गए. पहले से थोड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा, पर थोड़ा सा तो बढ़ गया. अभी टीम भी बढ़ रहे धीरे-धीरे. तो I think ये भी एक तरफ से ये भी काफी ISL भी हम लोग को ये like फुटबॉल ग्रो में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. I guess like for me यहाँ से हम लोग जो मैचेस का जो एक्सपीरियंस मिलता है, तो वहीं से हम लोग इम्प्रूव होके कंट्री के लिए like परफॉर्म कर पाते हैं. And in football, match experience is very important, as you also know. ISL has really helped us, to perform much better in for national team. No, absolutely. तो अभी हम एशिया कप की तरफ जा रहे हैं. उसके बारे में जानने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी. First of all, I have to compliment you. आप बहुत ज्यादा fit लग रहे हैं, जैक्सन. और जितने Thank you very much. Thank you very much. You're looking very fit, and that's the reason why for all the youngsters who are watching, see, ये एक actual motivation है, rather than fitness influences. This is actual motivation. So you tell me, what is a day in Jackson's life like? What is your routine like? क्या खाते हैं आप, कितना वर्कआउट करते हैं, सब बताइए. मैं भी कोशिश करूंगी कल. अरे बाप रे यार, मेरे से ज्यादा फिट हो जाएगा, फिर मैं सीक्रेट नहीं बताएगा मेरा. अरे यार, थोड़ा तो शेयर कर दो. सेम रूटीन जो फॉलो करते हैं बाकी प्रोफेशनल प्लेयर लोग, try to eat more less calories and all that I have been doing, Jackson. फिर भी फिट नहीं हो रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है. कुछ तो गड़बड़ है. I'm not working out. Obviously फिर तो प्रॉब्लम तो होएगा. But आप कितना भाग लेते हैं? भाग तो कोच के ऊपर डिपेंड है. कोच की मूड में डिपेंड होता है कितना भगाना चाहते हैं हम लोग को. कितना एक और भगाते हैं आप? हम लोग डिसाइड नहीं करते, वो कोच के ऊपर मूड होता है. जिस दिन भगाना होगा हमको भागना ही पड़ेगा. तो अगर मूड ग्राउंड पे मूड खराब होगा तो फिर तो सोच लो काफी भागना पड़ेगा. फिर आप कितना वो तो मैच में तो हम लोग 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर पहुंच जाते हैं. डिपेंड होता है कि कौन सा काइंड ऑफ टेम्पो, कौन सा टीम के साथ खेल रहे हो, वो डिपेंड होता है. अगर अच्छा टीम के साथ खेलेगा तो 13-14 किलोमीटर आराम से भागना पड़ेगा. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि एक टीम को देखा खेलते हुए, बोले भाई ये बहुत भारी टीम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस से था हिट हुआ है कि अरे
आपसे बोल के मेरे दिमाग में बहुत कुछ स्टोरी याद आ गया भाई। बताइए आप मुझे। क्योंकि जब वर्ल्ड कप से पहले हम लोग जब बाहर यूरोप में टूर गया और मेक्सिको काफी टूर गया था हम लोग, उस टाइम में वो जो भी टीम खेल रहा है इतना भागना पड़ता था, तो मैच से पहले हम सोचते कि आज तो कितना भागना पड़ेगा यार। ये सामने टीम जो है, हम लोग फ्रांस के साथ खेला, मेक्सिको के साथ जब खेला, और भी काफी टीम, पोर्चुगल में काफी क्लब के साथ खेला, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में भी काफी टीम के साथ खेला, पर वर्ल्ड कप में स्टिल वाज बेटर। जब बाहर जाके वो लोग होम में खेलते तो बहुत भागना पड़ता था उस टाइम में। तो पर अभी उस टाइम में आई थिंक हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल इतना नहीं था, इसलिए भागना पड़ा। अगर उस टाइम हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अभी के जो हाई एक्सपीरियंस, जो मैच एक्सपीरियंस अभी जो हम लोग को मिला है, ऐसा टाइम होता तो अभी तो ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। अब तो भगा लो, अब तो कोई टेंशन नहीं, अभी तो तो पहले कॉन्फिडेंस नहीं है तो बॉल मिलेगा, लॉस होएगा, फिर भागना पड़ेगा, वही ऐसा कर। और वो लोग कहाँ से बॉल देगा हम लोग को? वो लोग तो बॉल लेके चला गया तो छोड़ेगा नहीं वो लोग, वैसा सीन था। ऐसा देख के लगता था, लेकिन अभी जो है ना चेंज आया, अभी वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन अभी जब आप एशियन कप जाएंगे तो कौन सी में जहाँ आपको लगेगा कि भाई इसके सामने तो बहुत ज्यादा भागना पड़ेगा, या फिर कोई थ्रेट होगा उनकी तरफ? तीनों ही टीम तो स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। एशियन का मोस्टली सब स्ट्रॉन्ग टीम है वो लोग, जाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली अमेजिंग टीम। बट अभी मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है कि हम लोग वो लोग को भगा सकते हैं आराम से। अगर हम लोग जो अभी हम लोग कॉन्फिडेंट लेवल में खेल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उसी में ठीक है, बट वी नीड टू इम्प्रूव आल्सो। बट आई थिंक इफ वी टेक दैट कॉन्फिडेंट लेवल, एंड play like that, like with that confidence against the Australia team, like even the bigger team, at least we'll do well, we will not just run like a dot balls. We'll play much better, I think. Now if we take this confidence level even more higher, we need to make this confidence level even more higher, otherwise मुश्किल है बहुत। No, but I like the confidence that right now the Indian football team is riding. अगर आपने crowd support भी देखो तो उससे भी दिख रहा होगा कि कितना confidence बाकियों को भी आपकी तरफ है। तो कितना crowd difference आया जब से आपने करियर शुरू किया, और अभी जब साफ में जो हमने crowd देखा बैंगलोर में, has there been an increment in the number of people coming and watching you guys? पहले आई थिंक काफी इम्प्रूवमेंट तो हो गया अभी, आई थिंक। पर पहले भी था, जब इम्पोर्टेंट मैचेस आते तो फैंस ऑब्वियसली आते हैं, बट अभी आई थिंक इवन जो इम्पोर्टेंट मैच नहीं है बोलते हैं तो कम, लाइक लोअर टीम के साथ खेलने से भी इवन पीपल यूज्ड टू कम सपोर्ट अस, सो आई थिंक देयर हैव बीन लॉट ऑफ चेंज। ये फैंस के साइड से देखे तो काफी चेंज हो गया, फैंस लोग भी अभी काफी लोग आते हैं, काफी लोग मैच भी देखते हैं, मतलब ऑनलाइन जो भी है। तो चलो अगर मुझसे आपसे पूछा जाए कि कितना डीप जा सकता है इंडिया एशियन कप, हाउ फार कैन इंडिया गो? I think it's all about confidence, for me, I think one thing I want to mention, like all Indian player right now has a quality. Even I can see, I can feel, when I play with my teammate, I can feel the way kind of quality they have, really gave me confidence. I think when we did it, make this confidence even more bigger, and when we start trusting each other more, and I think that will change a lot. I think we'll perform even much better. I think that's confident level. फुटबॉल में कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्वालिटी सबके पास है, वो कॉन्फिडेंट लेवल होगा तो ऑब्वियसली आप अच्छा लेवल में खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वही आई थिंक चेंजेस लाने, वही कॉन्फिडेंट लेवल। अगर अच्छा टीम के साथ खेलो या खराब टीम के साथ भी खेलो, तो वही कॉन्फिडेंट लेवल जो है कम नहीं होना चाहिए, वहीं पे रहेगा तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगा हमारा इंडियन टीम। ओके, नाउ चलिए एक रैपिड फायर खेलते हैं। आई एम श्योर आपने बहुत खेले, मैंने आपके YouTube पे भी देखे बहुत सारे रैपिड फायर, लेकिन अरे यार मेरा रैपिड फायर बहुत खराब होता है, पहले भी बहुत खराब होता है मेरा। कोई बात नहीं है, अच्छा आपके अंदर कॉन्फिडेंस है? अरे हाँ, अभी कॉन्फिडेंस ग्राउंड में ज्यादा आता है, पर ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है अपने आप, पता नहीं कैसे। नहीं हाई हो जाएगा, आप देखोगे आप कितना अच्छा करोगे। ये तो मैंने अभी हाई हो जाएगा। अभी ये तो मैंने आपका आंसर देखा हुआ है, लेकिन योर फुटबॉलिंग आइडल कौन से हैं? आइडल जो आप इनको फॉलो करते हैं इन द वर्ल्ड फुटबॉल? ऑब्वियसली इन द वर्ल्ड फुटबॉल तो मैं CR7 को फॉलो करता हूँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, तो एक्चुअली ये मेरा उसी की वजह से तो मैं फिटनेस मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन आता है उसी के देखे, तो द वे ही मेंटेन हिज बॉडी, आई थिंक दैट्स माय मोटिवेशन। अभी आप मुझे छोड़ो, उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करो, CR7 को, और स्ट्रांग हो जाएगा। मैं उसको फॉलो जस्ट इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करना है, उसका रूटीन भी फॉलो करना पड़ेगा ना। भाई उतना फिटनेस मेरे अंदर आ जाएगा ना, मेरी मम्मी मुझे रिकॉग्नाइज करना बंद कर देगी। नहीं, उतना फिटनेस लड़की के लिए हानिकारक है। ओके, ऑलराइट, चलो मेसी और रोनाल्डो दोनों में से कौन? Obviously Ronaldo, obviously 100% Ronaldo. Okay. But I respect Messi. He has unbelievable things. So I respect Messi, but for me it's Ronaldo, because I am kind of player who like to work hard, who like to maintain. Messi is kind of more talented player, God gift player. So for me, Messi is great, but I will choose Ronaldo. I like to maintain, I will follow him this way.
जितने भी मेसी के फैंस हैं अभी अभी इन लोग ने अनफॉलो बटन टाइप कर दिया उन्होंने, मैं आपको बताऊं। इसके लिए मैं बोला ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, बट फिटनेस की वजह से मैं रोनाल्डो को फॉलो करूँ, माफ कीजिए मुझे, मेसी के फॉलो कर लो। और मुझे भी बोल रहे हैं कि रोनाल्डो का फिटनेस फॉलो करो। अकॉर्डिंग टू यू द गोट ऑफ वर्ल्ड फुटबॉल, ये तो इंटरेस्टिंग होगा, स्किल या फिटनेस या who do you think is the goat of world football? ये तो दोनों होना पड़ेगा। दोनों में से एक नहीं। आप मतलब क्या आप पूछना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसमें समझा नहीं मतलब। गोट लाइक गॉड ऑफ ऑल टाइम, द बेस्ट एवर वर्ल्ड फुटबॉल में। द प्लेयर जो, हाँ प्लेयर, द बेस्ट एवर। obviously I will choose I will choose Ronaldo. Okay, I'll choose Ronaldo. I will stay with Ronaldo only. Otherwise people will say he's changing this and this. I will choose Ronaldo. Ronaldo, all right. Where do you see India Yes. finishing in the upcoming Asian Cup? ये पूछ चुके मैं आपसे, लेकिन एक direct answer. Where do you see India finishing? I think we reach the top in Asia. I think if you want to play World Cup, I think we need to reach this in Asia. We need to reach in the top, in नहीं, ये Asia. जो Asian Then Cup only we होने can. वाला है, Asian Cup जो होने वाला है, उसमें कहाँ India finish करेगा? Obviously, I will aim for higher so that we will at least वहाँ तक नहीं पहुँच पाए ना, चलिए वहाँ तक तो थोड़ा नीचे तो आ जाएगा. तो obviously win. जीत के आएंगे, okay. जीतेंगे वहीं जीत के आएंगे. Your best buddy in the Indian football team? बेस्ट बढ़िया डिफिकल्ट है यार, मैं तो काफी फ्रेंडली हूँ, सबके साथ दोस्ती, अगर किसी के नाम ले ले तो बाकी लोग मेरा मार देंगे. मैं रिक्वेस्ट बाकी लोग बोलेगा ये आप इन्हें मारिएगा मत, ये एक का नाम लेने वाले बताइए। एक के नाम सभी अच्छे दोस्त है मेरा. मैं कहना वैसा है कि मैं एक आदमी से मतलब ऐसा नहीं कि एक आदमी से मतलब बहुत क्लोज रहना चाहता हूँ, ऐसा तो नहीं. तभी मैं सबके साथ अच्छा ही रहता हूँ मैं, और सबको मैं आपके साथ ऐसा ही मतलब फ्रेंडली रहना चाहता हूँ. मैं एक स्पेसिफिक आदमी चूज करना नहीं चाहता. तो जैक्सन अपने चीट डे पे क्या खाता? चीट डे में कुछ भी जो मुझे पसंद आ जाए कुछ भी खा लेता हूँ मैं. मतलब मणिपुरी फूड होगा तो मुझे तो अभी मैं पंजाब में बड़ा हुआ तो पंजाबी फूड भी पसंद है, नॉर्थ इंडियन फूड भी पसंद है बहुत काफी. मणिपुर का फूड लाइक मणिपुर जो लोकल फूड है वो बहुत काफी पसंद है. अभी तो साउथ में आगे केरला रास्ता के लिए खोल रहे हैं तो साउथ की फूड भी पसंद हो गया. अभी तो ये वन बाय वन में खाता हूँ ना, ये मन का चीट डे में, ये टाइम का चीट डे में मैंने ये खा लिया मणिपुरी खा लिया, तो नेक्स्ट में नॉर्थ इंडिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट में साउथ इंडिया, ऐसे खाता रहता हूँ. अब मुझे बताएं कि मैं कभी मणिपुर आई नहीं हूँ, तो मणिपुर में सबसे सुंदर जगह देखने के लिए क्या है? सुंदर जगह लोकताक लेक ऑब्वियसली, वो तो सबसे पहले मैं वो नाम लूंगा. उसके बाद काफी अच्छे नेचुरल जगह है, माउंटेन्स. मणिपुर को हम लोग बोलते हैं कि 9 पहाड़ से सराउंडेड ऐसा बोलते हैं, बॉर्डर ऐसा. तो पहाड़ में अगर चला जाएगा तो काफी नेचुरल चीज देखने को मिलेगा. ये दोनों चीज एंड ऑब्वियसली हम लोग का कल्चर में जो लाइक डांस वगैरह वो भी है, काफी कुछ है जो आपको अच्छा लगेगा. आप आ जाओ, फिर हम लोग आपको दिखा देंगे मणिपुर का क्या प्रॉपर दिखा देंगे क्या क्या आपको देखना चाहिए. और ऑफ कोर्स एक से बढ़कर एक फुटबॉलर है मणिपुर से. अगर आप इंडियन फैंस को कहना चाहेंगे एशियन कप से पहले तो क्या होगा? व्हाट वुड यू टेल द फैंस टुडे? जैसा वो लोग ने अभी जो मणिपुर से लेके बेंगलोर तक में जो इंडिया में हम लोग टूर्नामेंट खेला, जो जीता उसमें जो सपोर्ट दिया है ऐसा ही देते रहे, सपोर्ट करते रहे. तो हो सके तो और सपोर्ट करें ताकि हम लोग नॉट जस्ट फॉर दिस एशियन कप बाकी फ्यूचर में भी जो हम लोग का जो इंडियन फुटबॉल है, अभी हम लोग एशिया में लाइक काफी इतना नीचे तो नहीं, काफी थोड़ा नीचे है, वो ऊपर आया, टॉप में आए, आने के लिए हम लोग आई थिंक ऐसा ही सपोर्ट करते रहे. वही कहना चाहूंगा मैं वो लोग से. लवली. और इंडिया में आपके फेवरेट एथलीट कौन है अक्रॉस स्पोर्ट? इंडिया में अभी करेंटली एथलीट कोई भी चूज कर सकूंगा या फुटबॉल चूज करना पड़ेगा मेरे को? कोई भी स्पोर्ट फेवरेट. फुटबॉल में चूज करता हूँ. बहुत डिफिकल्ट है चूज करना यार, किसको चूज करूँ. आई थिंक चांगते भाई, आई विल चांगते आई विल चूज. द वे ही मेंटेन हिज एंड द काइंड ऑफ टैलेंट ही हैज, आई थिंक आई लव दिस मैन एंड वी आर वेरी क्लोज आल्सो. I get it, I talk to him a lot and he give me like lot of advice, for my future or like in many things, in many ways. He also give us a lot of advice and I always try to, we also play together, always volleyball. We'll take one small ball and we'll always together competition. Let's go Sangte bhai. Let's go challenge. Yeah. I think he's, we always go together and play, this small tennis, foot tennis, we call foot tennis. We'll play together always. In hotel also we'll go find somewhere, some space, we'll play there also and we'll like with bed, if you win, I will buy you coffee or something like that. We always do that wherever we meet, if we go outside India or we stay in India also. Lovely. Jackson, it's also MSD's birthday today. What message would you like to send? If I अभी जो मैंने चूज किया फुटबॉल में संगते भाई को चूज किया, आई थिंक अगर मैं क्रिकेट में बोलता तो मैं ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी को चूज करूंगा. एंड आई थिंक वो ग्रेट एग्जांपल है, वो फुटबॉलर भी रह चुका है, तो काफी स्टोरी या मूवीज में देखा है तो काफी इंस्पायर हुआ मुझे भी, एंड काफी यंग प्लेयर लोग भी इंस्पायर हुआ है उससे. तो आई विश हिम वेरी हैप्पी बर्थडे
एंड आई होप कि वो ऐसा ही अच्छा करते रहे, इंडियन क्रिकेट को और आगे लेके जाए। बट थैंक यू सो मच, दिस वाज फन, थैंक्स अ लॉट। मुझे एक्चुअली आपसे बात करके बड़ा मजा आया, बहुत ही नेचुरल था। मुझे भी काफी अच्छा लगा, आपने भी काफी सपोर्ट दिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू यू एंड मेक अस वेरी प्राउड एंड गो अहेड एंड विन। और आपका फिटनेस रूटीन आप मुझे बाद में भेज दीजिएगा, वो मैं फॉलो करने वाली हूँ, चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ, आपको सब शेयर करता हूँ। मेल कर दूंगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप वेस्ट नहीं करोगे। हाँ बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी तरीके से फॉलो करूंगी। आपको ईमेल लिखूंगी मैंने कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। आपको मैं ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो बता भी दूंगी कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ओ अच्छा, सच में ऐसा फॉलो करने वाला तो सच में मुझे लिख के देना पड़ेगा, फिर सच में मुझे सेंड करना पड़ेगा। अब इतना इच्छा दिखा रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको शेयर करने के लिए, Done, ladies and gentlemen, my new coach, Jeakson Oh, Singh. thank you. Thank you so much, Jackson. Have a पर great मेरा थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेरा फीस थोड़ा ज्यादा है तो देख लेना। ये जो है ना। ओके, ऑल राइट, आप मुझे बता दीजिए सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं। वैसे भी किसी ना किसी इंटरव्यू में आपका देखिए जो रूटीन है वो पता लग जाने वाला। ठीक है, डोंट वरी। Deal. There is a fee coming to Jackson for my end for sure. Chalo, bye, good night. Thank you. Bye. Bye. Good night. Thank you for doing this interview. Thank you very much. Bye. Take care.